Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wal aqibatu lil muttaqeen, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursaleen, wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin, amma ba'd. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وصدق فيما بلغنا رسوله النبي الأمين المتين الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفاں و شکستاں رات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد شہاب کس نوازی کن طبیبہ چار سازی کن مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. Respected elders, respected brothers, and my respected mothers, sisters, and all those who are listening and watching, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Let's present flowers of Salatu Salam in the court of best of creations, our master, the leader and master of all the messengers, the joy of our hearts, the coolness of our eyes, the beloved of Allah, Rasul-e Girami Waqar sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, and to recite after me, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad al-Nabi al-Ummi al-Habib al-Azim al-Ali al-Qadr al-Jah wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Shah ast Hussain, Badshah ast Hussain. Shah ast Hussain, Badshah ast Hussain, دی است حسین دی پناہ است حسین دی است حسین دی پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین حقا کے بنا لا الہ است حسین. Alhamdulillah, since the beginning of new Islamic year, we've been gathering here and we have learned, discussed many things related to the sacrifices of Ahl Bayt Athhar and the good work done by Khulafai Rashideen, and also the fazilat of Sahaba Ikram, Buzurgan-e-Deen, Ahl Bayt Athhar. And tonight, which is a night of Ashura, it is our final program of this Muharram series. And today,
tonight, Insha'Allahul Azim, we are going to listen such a things which are not easy to mention, which are not easy to listen, which are very sensitive matters, like how the family of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has been treated by the oppressors, by the Zalimeen, by the Yazidi forces, and how many difficulties they faced, and what a harsh and difficult time it was for the family of Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Allah हमें हक कहने, हक सुनने और हक पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। हम अहले बैत वाले हैं, हम सहाबा वाले हैं, हम अहले सुन्नत हैं जो अहले बैत और सहाबा दोनों को अपने सर का ताज मानते हैं, जो दोनों की रहनुमाई में दोनों की मोहब्बत अपने साथ ले लेकर चलते हैं। लेकिन आज जिस मौलाए पाक का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ, आपकी अजमत, आपका मकाम, आपकी शान ये है कि जहाँ आप सहाबियत के आला मनसब पर फाइज हैं, वहीं अहले बैते अतहार में भी आपका नाम और आपका मकाम नुमायां है। चूंकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन, हज़रत उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन, ये जो खुलफाए राशिदीन, शैख़ैन किराम, अकाबिर सहाबा हैं, इनका मकाम व मर्तबा सहाबा में सबसे बुलंद है। लेकिन इमाम हुसैन की ज़ात वो है जिस ज़ात को सिद्दीक़ अकबर ने अपने कंधों पे उठा के खिलाया है। ये ज़ात वो है जिसे फारूक आज़म ने अपने कंधों पे बिठा के खिलाया है। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि हज़रत फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में माले गनीमत से कुछ हिस्सा आया। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर, he is son of हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला। In terms of age, he is elder than सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला। हज़रत इब्ने उमर, अब्दुल्ला इब्ने उमर, इनकी उम्र, इनकी एज ज्यादा थी, ये बड़े थे। And when Imam Hussain radiallahu ta'ala anhu was kid, at that time he used to participate in the jihad and in battles, Hazrat Abdullah ibn Umar. So when the Male Ghanimat came to Madinatul Munawwara, Hazrat Umar radiallahu ta'ala, it was his time of Khilafat, he separated a large amount of this Male Ghanimat and specified it for Sayyidina Imam Hussain radiallahu ta'ala. Then Abdullah ibn Umar, he asked that I am your son, you are the Khalifa, and I been participating in the battles, in the jihad, when Imam Hussain was still a kid. But why my share is less than Imam Hussain here? He asked this question Sayyidina Imam Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala, कि हुसैन तो मुझसे छोटे हैं, मैं उम्र में बड़ा भी हूँ, जिहाद में शिरकत भी मैंने की, लेकिन फिर भी हुसैन का हिस्सा ज्यादा, मुझे कम क्यों मिल रहा है? आप मेरा हिस्सा भी उनके बराबर ही कर दें, अगर ज्यादा ना सही उनके बराबर कर दें। And you know what Hazrat Abdullah Umar ibn Khattab, the second Khalifa of Islam, what he replied, how he replied, उन्होंने क्या जवाब दिया? कहा, अब्दुल्ला इब्ने उमर, मेरे साहिबजादे, तुम उम्र में हुसैन से बड़े हो। हुसैन जिहाद में जब तुम जाते थे उस वक्त अभी उनकी उम्र नहीं हुई थी, तुम जिहाद में शिरकत करते थे, लेकिन हुसैन के बराबर हिस्सा लाने से पहले तुम हुसैन की जैसी माँ तो लाओ, तुम हुसैन की जैसी बहन तो लाओ, तुम हुसैन के जैसे नाना तो लाओ, तुम हुसैन के जैसे रिश्तेदार, खाला वो मामू तो लाओ। हुसैन का मर्तबा सिर्फ जिहाद में जाने से नहीं है, बल्कि इसलिए है कि हुसैन की माँ फातिमा, बाप अली और नाना मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। So all the companions, they always pay respect to Sayyidina Imam Hussain radiyallahu ta'ala, was a very notable person. Even at his early age and young age, he was very famous.
between the community of Muslims within the Madinatul Munawwara, around Madinatul Munawwara. और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने करबला के अंदर, you know, if a little thing happens, a small problem occurs in our life, if we face a very minor issue or any calamity, then our legs will start shaking. हमारे पैर कांपने लगते हैं. What is going to happen? क्या होगा, कैसे होगा, किधर होगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा. ये सब कुछ हमारी हालत बनती है. That is the reality. If you're facing any unfortunate situation, it is very difficult for yourself to keeping yourself calm. You are shaken. हमारे पैर डगमगाने लगते हैं, हमारा यकीन मुतज़लज़ल होने लगता है. But let's go to the Karbala. Let's see in the Karbala. There is a little babies. कुछ साल की 7-7, 8-8 साल की बच्चियां हैं. They are baby boy. Sayyidina Ali Azhar radiyallahu ta'ala, who need water. बच्चियों को पानी की जरूरत है, मस्तूरात को खाने पीने की जरूरत है. इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला in the camp, sometimes he looks toward the face of Hazrat Imam Ali Asghar, sometimes he looks to Bibi Sakina, and when they ask, Abba Jan, we need little water, हमें चंद कतरे चाहिए पानी के. Can you imagine how difficult this situation was for Imam Hussain radiyallahu ta'ala when he cannot bring water to his little kids? When he was restricted from drinking water. Not only this, the things are moving, going again and again, move forwarding. And the situation is becoming more difficult for the family of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam. Food was stopped, water was stopped, and now they are after their lives. They started chasing and not having one after one, the members of Ahl Bayt Athhar. Imam Hussain, he saw the lash of Hazrat Ali Asghar, the lash of Ali Akbar, Hazrat Qasim, Hazrat Abbas Alam Bardar, Hazrat Aun Muhammad. All these people, all these family members, all his followers, they are all martyrdom. They are all blessed with the martyrdom. ये सब शहीद कर दिए गए, सब को शहीद कर दिया गया. But if you look into the history, you will never find, not for a single second, that for any moment, Hazrat Imam Ali Maqam radiyallahu ta'ala anhu has lost his calmness. हज़रत इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला के कदमों में लग़ज़िश आई हो, जुम्बिश आई हो, कदम लड़खड़ाए हो, डगमगाए हो, ये तारीख में कहीं भी आपको नहीं मिलेगा. जानते हो ऐसा क्यों है? क्योंकि हुजूर ने फरमाया कि हुसैन और हसन मुझसे मुशाबे हैं, सर से लेके कमर तक हसन मेरे मुशाबे है, और कमर से लेकर पैर तक हुसैन मेरे मुशाबे हैं. जब नबी ताइफ में नहीं डगमगाए, जब नबी बदर में नहीं डगमगाए, जब नबी हुनैन और उहद में नहीं डगमगाए, तो उसी तरबियत और मुशाहबत का असर मैदान करबला में इमाम हुसैन दिखा रहे हैं. वाई हुजूर ने फरमाया हुसैन कमर से लेकर कदमों तक ये मेरे मुशाबे है, हसन सर से लेकर कमर तक मेरे मुशाबे है. यही वजह है कि इमाम हसन का जो कारनामा है वो आपकी ज़बान अक़दस का है. आपने सुलह कराई मुसलमानों के दो गिरोहों में, हजारों जानों को बचा लिया. लेकिन इमाम हुसैन का जो कारनामा है वो मैदान में डट जाना है, क्योंकि वहां इम्तिहान नबी के इस्तेकामत और नबी की शुजाअत और नबी की तरबियत का था. That is why after all these critical situations, and after all these difficult moments, Imam Hussain still firm on the path of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So the first lesson we are learning from the Karbala today is it doesn't matter what happens in your life. Many of us, many of Muslims, what they do, if they face any problem, they started running away from the deen.
Oh, I lost this, so I can't come to the masjid now. Because of this, I can't go to the masjid. That happened to me because I do. That's why I can't attend for the Jamaat. I can't go to the namaz. They ran away. They started involving themselves in the sins, in the bad habits, in the bad things. Tell me, have you faced maybe 100,000 thousand part of what Imam Hussain faced there? इमाम हुसैन ने जो वहां फेस किया उसका हजारवां हिस्सा भी क्या हमने अपनी जिंदगी में कभी देखी है तकलीफ? नेवर. बट इमाम हुसैन उस हालत में भी दीन पे कायम रह करके, नमाज कायम करके, नबी की शरीयत पे कायम रह करके हमें ये बता रहे हैं कि लिसन, इफ calamities you face, if you face problems, troubles, issues and hardships in this all these situations, what you need to do is not running away from the masjid, running away from deen, running away from Allah, but you need to get back to Allah, return to Allah and make your connection more stronger with Allah subhanahu wa ta'ala. That is what Imam Hussain radiyallahu ta'ala anhu teaching. आज मैं बहुत सीरत नहीं बताऊंगा, कुछ सबक ही हम उस पर बात करेंगे. And also the current challenges we are facing, what Karbala teaches us, and Karbala and the current challenges. One of the most biggest challenges nowadays the Muslim community, especially in the UK, facing, it is a thing called RSE. I'm coming to this. I'm coming to this point. Before that, let's see what was the conflict, a dispute between Hazrat Imam Ali Maqam and Yazid. इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला यजीद के दरमियान में जंग या झगड़ा किस बात का था? Was it because of wealth? And what Yazid was asking from Imam Hussain? इमाम हुसैन से यजीद मांगता क्या था, कहता क्या था? इमाम हुसैन से यही कहता था कि आप कुछ भी मत करें, कुछ भी मत करें, बस अपना हाथ मेरे हाथ में रख दें, अपना हाथ मेरे हाथ में रख दें. That is enough. सिर्फ अपना हाथ मेरे हाथ में रख देना है, उसके अलावा कुछ नहीं. That is what he is demanding. That is what he was asking from Imam Hussain. लेकिन इमाम हुसैन का ये कहना था कि यजीद, ये हाथ तेरे उस गंदे हाथ में नहीं जा सकता जो शराब अपने हाथ में उठाता है. यजीद, ये हाथ तेरे उस गंदे हाथ में नहीं जाता जिससे तू गलत कामों के लिए फरामीन की तरफ और बातों की तरफ इशारा करता है, क्योंकि ये हाथ नबी के हाथ में गया हुआ है, ये हाथ मुस्तफा के हाथ में गया हुआ है. तो पता चला कि सारी की सारी लड़ाई जो थी, ये सारा का सारा मामला हाथ को हाथ में देने का था, हाथ हाथ में देने का था. लेकिन अगर आप तारीख को देखें तो पता चलेगा कि तारीख में इस बात का जिक्र मिलता है कि इमाम आली मकाम के बदन को छलनी कर दिया गया, आपके होठों से यजीदियों ने बदतमीजी करने की कोशिश की, उस पे छड़ी घुमाई, आपके सरे मुबारक को काट लिया, आपकी गर्दन मुबारक को काट लिया, आपके बदन के दूसरे आज़ा का तस्करा मिलता है. लेकिन पूरी तारीख उठा करके छान लो, तारीख की कोई भी किताब उठा करके देख लो, आपको इमाम आली मकाम के हाथ का कहीं जिक्र नहीं मिलेगा. कहीं ये नहीं मिलेगा कि वो हाथ गए तो कहां गए, क्योंकि मामला सर का नहीं था, मामला लड़ाई सर की नहीं थी, बात हाथ की थी, हाथ में हाथ देने की. यजीदी जिन्होंने इमाम आली मकाम की शहादत के बाद तन से सर को जुदा कर दिया, गर्दन काट ली, सर काट लिया, नेज़े पे टंगा दिया और पूरे मुल्क में घुमाने लगे, कूफा से लेकर दमिश्क तक के उसे नेज़े पे टांग कर ले जाने लगे. जो सर काट के ले जा सकते हैं, क्या वो यजीदी जो लड़ाई सर की नहीं हाथ की थी, तो क्या हाथ काट के नहीं ले जा सकते? लेकिन तारीख की कोई भी किताब उन हाथों के हवाले से बात नहीं करती है. क्यों? क्योंकि कुदरत ये पैगाम दे रही है कि हुसैन तुम्हारे कदम अली असगर और अली अकबर औनो मोहम्मद की शहादत पे न डगमगाए, तुम्हारी गर्दन न झुकी, कट तो गई लेकिन झुकी नहीं. ये हाथ तुमने यजीद के हाथ में नहीं दिया इसलिए कि तुम उस हाथ की पाकीज़गी की हिफाजत कर रहे थे जो हाथ नबी के हाथ में गया था, जो हाथ मुस्तफा के हाथ में गया था, वो हाथ किसी और के हाथ में नहीं जा सकता. उस हाथ की तुम हिफाजत कर रहे थे और बात उसी हाथ की थी. बहुत मुमकिन था कि शहादत के बाद
यजीदी हाथ काट लेते और ये कहते कि सुनो, जिंदा रहते हुए तो इमाम हुसैन के हाथ को हमने हाथ में नहीं ले सके, लेकिन शहादत के बाद तो उनका हाथ यजीद के हाथ में आ गया, लेकिन उन हाथों का कहीं जिक्र मिलता ही नहीं है, तारीख बयान ही नहीं करती है, बताती ही नहीं है। गोया कि कुदरत ये कह रही है कि हुसैन, जब तक तुम जिंदा थे तुमने अपने हाथों की अपनी जाहिरी हयात में खुद हिफाजत की, और जब तुम नबी के नाम पे शहीद हो गए तो तुम्हारे मुबारक हाथों की हिफाजत हम करेंगे, हम करेंगे। दैट इज व्हाई यू कैन नॉट फाइंड एनी जिक्र अबाउट द हैंड्स ऑफ इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला, क्योंकि झगड़ा पूरा हाथ का था, हाथ में हाथ देने की बात थी। देखो now say after that, look, Imam Hussein, he didn't shake his hand, but now we have his hand. That's what they said about the head of Imam Hussein radiallahu ta'ala. But there, the matter was giving a hand into the hand. It means doing a bay'ah, accepting Yazid as a leader, accepting Yazid as a ruler, accepting Yazid as a hakim. But if Imam Hussein radiallahu ta'ala he would have accepted Yazid as a ruler, then the things would have completely changed. Why? It doesn't matter how many people behind Yazid. It doesn't matter how much bigger army he have, how much weapons he have. It doesn't matter. But what matters? Only the hand of grandson of Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. सिर्फ इमाम हुसैन का हाथ में हाथ देना यह मैटर करता है। आपने सोचा कभी ऐसा क्यों? यजीद के पास फौज थी, हजारों लोग फॉलोअर थे, बट स्टिल व्हाई ही इज आस्किंग फॉर इमाम हुसैन टू डू द बैत? व्हाई ही वाज आस्किंग एंड फोर्सिंग इमाम हुसैन to accept him as a ruler, as a imam, as a hakim? क्योंकि यजीद जानता था, it doesn't matter, I have tens of thousands of followers, I have, ये सब कुछ मेरे पास है, लेकिन इन सब के होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है इस बात से कि आमिना के लाल का नवासा फातिमा का दुलारा किसे हाकिम मानता है, क्योंकि जिसे हुसैन हाकिम मान लेंगे उसे पूरी दुनिया हाकिम मान लेगी, अगर हुसैन नहीं मानेंगे तो पूरी दुनिया नहीं मानेगी। That is what happened. Imam Hussein rejected him, so he is being rejected since this time, that time till today. आज तक कोई यजीद को नहीं मानता है। क्यों? क्योंकि अप्रूवल नबी के घराने से होकर के जाता है, क्योंकि अप्रूवल अहले बैत अतहार के यहां से होकर के जाता है। अब आइए मेन पॉइंट की तरफ, व्हाई द बैटल ऑफ करबला हैपेंड? Did Imam Hussein had any personal differences with Yazid? Does he have any rivalry? क्या उनके खानदानों में कोई ऐसा मामला था? Does he have any personal dispute, any personal issues with Yazid? No. Yazid was offering Imam Hussein a lot of money. He offered a lot of money, कहा हुसैन हम आपको ये दे देंगे, ये दे देंगे, ये दे देंगे, ये दे देंगे। लेकिन इमाम हुसैन ने उसमें से किसी भी चीज को नहीं एक्सेप्ट किया। क्यों एक्सेप्ट नहीं किया? क्योंकि वहां जो मामला था is protecting deen of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, protecting the shariat of Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, protecting the sunnahs of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And not only this, Yazid in his era, Yazid in his period, Yazid at his time, what he have done, he made alcohol consuming openly. The consumption of alcohol was being happened at the time of Yazid openly. खुले आम शराब पी जाती थी, जिना खुले आम किया जाता था, जुआ खेला जाता था, अय्याशी की जाती थी, बदकारी की जाती थी, वनऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, हम जिन्स परस्ती भी की जाती थी। These are the things Imam Hussein radiyallahu ta'ala was looking, and he was watching, and he was thinking, if today I accept Yazid as a ruler, and Yazid is making all these things normal,
then what will happen to the coming generations? Then what will happen to the Muslims, those who are coming after us? हमारे बाद आने वाली नस्लों का क्या होगा? इसीलिए इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने ये गवारा कर लिया कि if you want to kill my son Ali Asghar, it is okay, I am ready to sacrifice him for the deen of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. मैं अली अकबर को कुर्बान कर दूंगा, औनो मोहम्मद को कुर्बान कर दूंगा, कासिम की जवानी लुट जाएगी, अब्बास अलमबरदार शहीद हो जाएंगे, हुर इब्ने रियाही और मेरे जो दर्जनों फॉलोअर्स हैं और मानने वाले हैं सब शहीद हो जाएंगे, सब मंजूर होगा। लेकिन यजीद तो जो गुनाह को आम करना चाहता है, शराब को आम करना चाहता है, जिना को आम करना चाहता है, इससे हुसैन कभी राजी नहीं होगा। Now stop here for the moment and now look towards other situation. What are the conditions nowadays? Where the Muslim Ummah is hiding, where our youth are going, where the youngsters of Muslim Ummah, Muslim community going. We are now finding in our community many of the Muslims, those who are consuming alcohol. क्या हमारी मुस्लिम उम्मत में नौजवानों में ऐसे नौजवान नहीं है जो आज शराब पीते हैं, शराब का कारोबार करते हैं, शराब का धंधा करते हैं? There are no Muslims who say they are Muslims, but still they are making a business of alcohol. They are purchasing it, they are selling it. Remember, शराब का लेना, शराब का देना, शराब का बेचना, शराब का उठाना, शराब लेने में मदद करना और शराब का ट्रांसपोर्ट करना, every single thing is haram, haram and haram. And to protect and to realize, to make us realize how bad sharab is, how bad his alcohol is, Imam Hussain sacrificed his whole family. Then we, after that, remembering Imam Hussain radiallahu ta'ala, then it is our responsibility to make sure our community is free from the alcohol. Our society is free from alcohol. Not a single youth, not a single brother, not a single sister from the Muslim Ummah, Muslim community, they are daring to put a touch or consume alcohol. To make sure that working regarding this, it is responsibility for every single one of us, those who are celebrating the Shahada and remembering the Shahada of Imam Hussain radiallahu ta'ala today. You know how bad this alcohol is. When I'm talking about alcohol, it is not only the liquor. When I'm talking about everything which causes intoxication. जो नशा और चीजें, drugs, weed, and all other things, जिसके अंदर मुस्लिम नौजवान इतने फंस गए हैं. Do you think these things are simple? Do you really think it is very cool to have a sip of alcohol? Do you know how dangerous it is? If you look into the reports regarding the alcohol, what you will find, within the UK itself, more than 20 billion pounds yearly are being wasted because of the consumption of alcohol. 20 billion pounds. And the government regulatory committee, they issued a report. In this they have mentioned thousands of hours yearly are being wasted because of the consumption of alcohol. Because of the consumption of the alcohol. And yearly 120,000 incidents are happening because of the alcohol. 40% or more than 60% of the victims, those who are coming to the hospitals, are being taken towards the emergency departments, they are the victims of alcohol. 130,000 children, 130,000 children, Allahu Akbar, 1,30,000 बच्चे every year, they are suffering from the bad influence because their parents are alcoholic. Because the parents are alcoholic. 70% केसें यूके के अंदर जो ले जाई जाती हैं between 11 a.m. to 5 a.m. the midnight till the 5 a.m. 70% of these cases is because of the alcohol. Because of the alcohol. It is a plague of the community. Alcohol
it must be a biggest concern for every single one of us. शराब ये हमारा बहुत सबसे बड़ा concern होना चाहिए. Why? This is destroying the community. This is destroying the society. This is destroying the ummah. This is destroying our future. This is destroying our youth and our youngsters. Not only boys, many of the Muslim girls, وَنَوْزُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ, they say we are socially drinking. Let's see what are the effects you get from the alcohol. What are the bad impacts on your life? Do you know an alcoholic person, he cannot make difference between his own wife, between his own daughter, his mother and sister. The person who cannot make a difference between his own mother, sister and daughter, who cannot recognize who is my daughter, who is my wife, who is my mother, who is my sister, how can he make a difference? How can he understand who is the daughter of other or someone else? वनौज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक. इसीलिए शराब को हराम किया गया. जब वो अपनी माँ बहन में फर्क नहीं कर सकता, when he cannot protect his own mother, daughter, sister and wife, then how can he be safe for anyone else, mother, daughter and sister and wife? You know the social harm of the alcohol for our community. The bad relationships is one of the major concern of our community, our society, and the reason behind this for many families is a consumption of alcohol, using drugs, sharab, nasha, isme jana. Allahu Akbar. Not only this. In this dunya, how medically the alcohol will finish your life. Alcohol तुम्हारे दिमाग को खराब, it will destroy your brain. Your livers, तुम्हारे जो अंदरूनी मामला, it causes one of the biggest reasons for the heart attacks. दिल का दौरा, दिल की बीमारी, बदन की बीमारी, depression. A physician, एक बहुत ही expert doctor है, he says 30 years of my life I'm treating the people, those who are addicted to alcohol. I ask all of them, why are you consuming alcohol? They say to release some stress, to get out from the depression. But this doctor says more than the 90% these people, those who started consuming alcohol, शराब की आदत उन्होंने इसलिए डाली ताकि वो स्ट्रेस से, डिप्रेशन से निकले. लेकिन वो कहता है कि 90% से ज्यादा लोग, the situation got more worse. They became more depressed. They are facing more stress. Their life became more worse because of the alcohol. याद रखो, it is not only a harmful thing in this dunya, alcohol. All the youth, all the youngsters, those who are listening to me on the day of Karbala, because this is the biggest challenge, one of the biggest challenges our community, our societies in UK, we are facing. Do you remember how was the situation is? I know few of the masajid, وَنَوْزُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ, alhamdulillah, we have a good trust here, and those who are, mashallah, know what is haram and halal, and our committee members, may Allah subhanahu wa ta'ala give them a long life, and may Allah give them tawfiq to serve the house of Allah subhanahu wa ta'ala as they are doing now for a long time, inshallah lazim. But I know personally many masajid in the UK, the people, those who are in the trust, in the committees, they own shops of the alcohol. They sell alcohol. Can you imagine how worse the situation is here? When those who are taking care of house of Allah subhanahu wa ta'ala, they themselves making a business of alcohol, then how can we protect our children, our youth, our youngsters from the consumption of alcohol? We need to think when we are remembering the shahadat of Imam Hussain today, that Imam Hussain sacrificed all his family to stop us from the consumption of alcohol, because Yazid was one of the biggest alcoholic. Yazid शराबी था, उसी शराब के नशे के रद में, और वो जो शराब को जायज और हलाल करार देना, वनौज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, आम कर देना, इसे आम कर रहा था, उसके खिलाफ इमाम हुसैन की ये शहादत थी. If we are remembering today Karbala, if we are remembering the sacrifice of Imam Hussain radiyallahu ta'ala, then we must think about what are the steps we are taking to protect our communities, our families, our society, our youth and our youngsters from the consumption of alcohol. ये बहुत बुरी बला. You may be thinking कि दुनिया में पी लिया. Many of them say they are social drinkers.
हम social drinker हैं. We are not addicted to it. Occasionally we drink social drink. Are you talking about social drinking of alcohol? Do you know what is the punishment for the drinking alcohol? Just taking a one sip. एक कतरा शराब का, फरमाया गया जो शराब का एक कतरा भी अपने हलक से नीचे उतारता है, अल्लाह मौत के बाद उसके चेहरे को काबे से फेर देता है. The companions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, they said, a person who consumes alcohol, वो जो शराब पीता है, उन्हें कहा शराबी को दफन कर देना. अब्दुल्लाह इब्ने मसूद says, then hang me on this tree. कहते हैं मुझे इस दरख्त पे टांग देना और शराबी को कब्र में लिटाना. जब कब्र में लिटा दो, उसका चेहरा तुम ट्राई करो, कोशिश करो कि किबले की तरफ हो जाए, किबले की तरफ उसका चेहरा हो जाए. तुम 100 नहीं, 200 नहीं, 1000 मर्तबा भी ट्राई कर लो, लेकिन जो शराब पीता है, अगर उसका चेहरा किबले की तरफ बाकी रह गया तो तुम मुझे इस दरख्त से नीचे मत उतारना. हाँ, उसका चेहरा किबले से फिर जाए तब मुझे उतारना, क्योंकि मैंने हुजूर को यह कहते हुए सुना है कि जो शराब पीता है, अल्लाह उसके चेहरे को काबे से फेर देता है. काबे से चेहरे का फेर दिए जाने का मतलब यह है कि वो अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाता है. इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिन. माय सिस्टर्स, my brothers, those who have involved themselves in such a bad habit, you might be thinking it is cool to hanging around with our friends and then we have a few sips occasionally or socially we are drinking. नहीं, शराब का एक the drink of alcohol you are using in this world, इस दुनिया में जो तुम यूज कर रहे हो ना, जो भी इसको यूज कर रहे हैं, फरमाया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, जब क़यामत कायम होगी तो उस दिन क्या होगा? क़यामत के बाद जब जहन्नम में डाला जाएगा तो जो बंदा शराब पीता है, the person who drinks alcohol, who consumes alcohol, remember, not only drinking alcohol is haram, purchasing alcohol is haram, lifting alcohol is haram, holding alcohol in your hand is haram, transporting alcohol is a haram. Any amount you get by the alcohol, from the alcohol, every single penny of this amount is haram. If you are eating anything by purchasing this amount which you got because of the alcohol, then you are not eating anything. Actually, you are putting the fire of Jahannam in your stomach. जहन्नम की आग तुम अपने पेट में भर रहे हो. जहन्नम की आग तुम अपने पेट में भर रहे हो. याद रखो, फरमाया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो दुनिया में शराब पीता है ना, उसको जहन्नम में जहन्नमियों का खोलता हुआ गंदा खून और पीप पिलाया जाएगा. He will be served a pus and a blood of Jahannamis, people of the hell, those who consumes alcohol in this world. जहन्नम में उनको ये अजाब दिया जाएगा. और जानते हो ये अजाब ऐसे ही नहीं होगा. एक बात, ये अजाब ऐसे ही नहीं होगा. जब उनको जहन्नम में डाला जाएगा, how they will be thrown into the Jahannam. Sometimes they will be dragged into the Jahannam. How? उनका जो ये पैर, उनका पैर इसको तोड़ दिया जाएगा और गर्दन की तरफ से निकाल करके या सीना चीर करके वहां से निकाल दिया जाएगा. Then they will be thrown into the alcohol. जहन्नम में फेंके जाएंगे. This is the thing we need to care about. अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अता फरमाए. Why? इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, he didn't sacrifice his life, his family, all his followers in terms of wealth, in terms of holding a power or a land. There was no dispute. यजीद शराबी था, शराब को आम करता था. इस लत से उम्मत को बचाने के लिए इमाम हुसैन ने अपनी जान दी. इमाम हुसैन ने अपनी कुर्बानी पेश की ताकि आने वाली नस्लें इस लानत से बचें. आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन.
If anyone, maybe within your friends, your family, the people you know, अल्लाह ना करे हम में से कोई, आप में से कोई ऐसा हो, अल्लाह सबको उस लानत से बचाए. If we are not realizing our responsibility regarding these challenges, because of what Imam Hussain sacrificed all his life, all his family, सब कुछ उन्होंने कुर्बान कर दिया. By what face we will face the Ahl Bayt Athhar on the day of judgment? किस चेहरे से हम अहले बैत अथहार के सामने जाएंगे? So it is our responsibility. A learn to lesson from the Karbala. A lesson to learn from the Karbala is take every possible measure you can take against the alcohol. फरमाया गया कि the person who consumes alcohol, even he is married, but still he commits a zina continuously with his wife. Why? Because he doesn't realize, he doesn't know during the time when he was alcoholic, when he is in the form of intoxication, what he has said. He don't remember. तो इसीलिए फुक़हा ने कहा शराबी अगरचे शादी भी कर ले, लेकिन अक्सर हालात में ऐसा होता है कि वो बीवी के साथ तो रहता है, लेकिन उसका एक एक लम्हा बीवी के साथ गुजारा जाना उसके नामे अमाल में जिना लिखा जाता है. It will be recorded as an adultery. That is why the companions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, a person who is giving his daughter to an alcoholic person, then he is like presenting his own daughter for adultery. जो शराबी को रिश्ता दे, फरमाया साहबा ने वो ऐसा है जैसे कोई अपनी बच्ची को जिना के लिए पेश कर रहा हो. वनऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक. This is a lesson we need to learn. यजीद ने यही किया था. यजीद ने यही किया था कि उसने शराब को आम कर दिया, जिना को आम कर दिया, जुए को आम कर दिया, होमोसेक्सुअलिटी को आम कर दिया. This is one of the another challenge which this generation in our times which we are facing. इमाम हुसैन की लड़ाई इन्हीं गंदगियों, इन्हीं बुराइयों और इन्हीं गुनाहों की तरफ थी. क्यों? क्योंकि नबी का जो दीन था, नबी का दीन वो पाक दीन था, नबी का दीन वो मुकद्दस दीन, वो नबी का दीन बहुत ही मुतहर दीन, जो सब किसी को अच्छी पाकीज़ा मोहब्बत इज्जत और राहत और सुकून वाली जिंदगी देता है. लेकिन यजीद ने उन सबको चेंज कर दिया, सबको चेंज कर दिया. यजीद के ज़माने में गुनाह, अय्याशियाँ, बदकारियाँ आम हो चुकी थी. इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अब आप सोचिए कि वी ऑल गो टू मदीना. Let's feel how Imam Hussain radiyallahu ta'ala anhu have faced these situations. कि इमाम अली मकाम करबला के वो जो बच्चे थे, करबला का वो जो काफ़िला था, उसमें जो मस्तूरात थी, जो माएँ थी, बहनें थी. हाउ डू यू फील ब्रदर कि अगर कोई आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी इज्जत की तरफ कोई गलत नज़र से देखे तो आपको कैसे लगता है? डोंट यू फील कि उसकी आंखें नोच लो? गैरत वाला जो भी होगा, गैरत वाला जो भी होगा, गैरतमंद जो भी होगा, वो तो यही चाहेगा कि हर वो गंदी नज़र जो मेरी बहन, मेरी बीवी, मेरी माँ, मेरी बेटी की तरफ उठती है, उन आंखों को नोच ले. जिसके पास गैरत होगी वो यही चाहेगा. नो वन अलाउज दिस, नो वन कैन टॉलरेट दिस. अब आप सोचिए वो बीवी खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शहजादियाँ, जिनके हवाले से आला हज़रत कहते हैं, जिसका आंचल ना देखा माहो महर ने उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम. जिसका आंचल ना देखा माहो महर ने, उनकी शहजादियों पे ये यजीदी करबला में माज़ अल्लाह गंदी नज़रें उठाने की कोशिश कर रहे हैं. कैन यू इमेजिन हाउ डिफिकल्ट दिस सिचुएशन वाज फॉर इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला, प्रोटेक्टिंग हिज फैमिली, प्रोटेक्टिंग द pious sisters and daughters of the family of Ahl Bayt, Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. When we travel to Madinatul Munawwara, जब हम मदीना जाते हैं, we don't live in Madina. हम कभी जाते हैं मदीना, जिसको अल्लाह तौफीक दे, मौका दे, कोई साल में चला जाए, 6 महीने में चले जाए, कोई 2 साल में चले जाए, जिसको जैसे जैसे सादत तौफीक मैसर जाते हैं. बट एवरी एंड ईच वन ऑफ अस जो भी मदीना जाता है, ये बताना कि जाने में जितनी खुशी होती है, आने में उतना दुख होता है कि नहीं होता है? आने में उतनी तकलीफ होती है कि नहीं होती है ना? जितना ही पत्थर दिल हो, लेकिन मदीने से जब वो निकलने लगता है
तो फिर उसे याद आने लगता है कि यार कल मैं जब जा कर के लंदन में फजर के लिए जाऊंगा तो फिर मस्जिद नबवी में मेरा यहाँ आना मुझे याद आएगा। कल जब मैं जाऊंगा और अपनी मस्जिद में खड़े होकर के सलाम कहूंगा या रसूलुल्लाह सलातो वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, तो मुझे याद आएगा कि मैं यहाँ रोजे की जाली के सामने खड़े होकर सलाम कहता था। These all things we all feel, ये सब हम महसूस करते हैं। ये हम महसूस करते हैं, ये हम कब महसूस करते हैं? जबकि हम मदीने के रहने वाले नहीं हैं, हम मदीने में पले बड़े नहीं हैं। कुछ ही लम्हों के लिए गए, कुछ ही लम्हों के लिए, कुछ दिनों के लिए रहे, फिर वापस आ गए। ये सब हम महसूस करते हैं। लेकिन अब आप ज़रा सोचिए तो सही कि इमाम आली मकाम जो मदीने में पले, जो मदीने में बड़े हुए, who grown up in Medina, who lived in Medina, every single street and walls they are witnessing the presence of Imam Ali Maqam radiyallahu ta'ala Madinatul Munawwara। वो इमाम आली मकाम जिनका घर, जिनकी माँ का घर कहीं और नहीं, नबी के रोज़े के बिल्कुल सामने था। अल्लाहु अकबर। ज़रा सोचो तो सही, सोचो तो सही कि अब करबला के लिए जाने के लिए इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मदीने से रुखसत होना है। He have to leave Medina. He have to leave Medina with his family. And another thing, एक और बात है कि हम जब मदीने से वापस आते हैं तो फिर बहुत सारों का तो ऐसा होता है कि भाई नेक्स्ट ट्रिप की प्लानिंग ऑलरेडी हो चुकी होती है, या फिर वो नेक्स्ट साल कब आना है, नेक्स्ट मरतबा कब जाना है, उसके डेट्स के हवाले से देख रहे होते हैं। और ये सब तैयारी और उम्मीदों और ख्यालात से हम मदीने से वापस आते हैं। लेकिन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला जो मदीने में पले बड़े रहे, वहाँ की फ़िज़ा में, वहाँ की हवाओं में, नबी के रोज़े के साए में, अल्लाहु अकबर, मस्जिद नबवी में जो इमाम हुसैन पले बढ़े, अब उनको जब मदीना छोड़ करके जाना है तो दिल में ऐसी कोई वो नहीं है कि अब मुझे, क्योंकि वो जानते थे अब ये ऐसा इम्कान बाकी नहीं है हुसैन कि अब तो तुम मदीने से जा रहा है, ये बच्चे भी जा रहे हैं, दोबारा ये पलट के मदीने आएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसका कोई इम्कान या तवक्को नहीं है। कैन यू इमेजिन हाउ डिफिकल्ट दिस सिचुएशन वाज फॉर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला। करबला सिर्फ वो चंद घंटों की लड़ाई नहीं है भाई। चल, करबला इज नॉट ए बैटल विच हेल्ड फॉर अ फ्यू आवर्स, नो। करबला मदीने से लेकर मक्का तक, मक्का से लेकर के कूफा तक, कूफा से लेकर दमिश्क तक, और दमिश्क से लेकर मिस्र के दरबार तक लड़ी जाने वाली जंग का नाम है, जहाँ हर मोड़ पे, हर कदम पे अहले बैत अत्हार ने अपनी कुर्बानियाँ पेश की, हर मोड़ पे अहले बैत अत्हार ने अपनी कुर्बानियाँ पेश की। Why they did all these things? ये सब कुछ उन्होंने क्यों किया? क्यों किया? They were not after fame, they were not after wealth, they were not after power, they were not seeking attention। क्योंकि उन्हें अटेंशन की क्या जरूरत है? उनके लिए अटेंशन तो ये है कि जिब्राइल जो मुर्गे सिदरा हैं मदीने में तो आ जाएं, लेकिन उनके घर में आने से पहले इजाजत लेकर के दाखिल हो। Why they need any other attention when the angels of Allah paying attention to them? Why the Ahl Bayt Athhar they need any wealth and any fame when Allah subhanahu wa ta'ala's messenger declared the Hassan and Hussein, they are the leader of the youth in Jannah? What other post they need? What another maqam or status they need? They had all of these things, but their battle is for protecting the values of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam, the Sharia of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam। वक्त हमारा तेजी से आगे बढ़ रहा है। The another challenge nowadays which we are facing, जो आज हम फेस कर रहे हैं, वो क्या है? Do you know here many of the parents here, बहुत सारे ऐसे होंगे जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, है ना? Many of the parents may be listening to me now, and obviously you all sending your kids to the schools, अपने बच्चों को आप स्कूल भेजते हैं, but do you really know what your kids are learning in their schools? Do you have any idea the syllabuses and the new laws which been made and the new things which are
already implemented, how harmful morally, religiously it will be for your children, your kids. How many of you have went through the syllabus of the schools in terms of in order to protecting your children from the adultery, from zina and from haram relationships? How many of you heard about RSHE and RSE? कितने लोगों ने इसके हवाले से सुना है? How many of you have taken steps regarding this? How should we respond to this thing? The reality is, maybe many of our parents of our community, they don't even exactly know what is RSEs. उनको exactly शायद पता भी नहीं होगा. They might have idea, okay, some sort of, but exactly they don't know. Remember, I don't want to go very deeply into it. I went through the syllabuses of this, made it which are being taught in the different schools of London here. But the basic and common thing, which is common in all of these syllabuses, what is it? It is making your children understanding that how important relationships are. Building relationships. So when they are talking about the relationships, it doesn't mean it's just halal relationship. It doesn't mean a relationship which starts after the marriage. No. The relationships which they are being taught there is a relationship before marriage. Not only this, but the relationship with the same gender. Can you imagine? Can you handle or tolerate this situation when your kid, وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ, bringing some stranger to your home and say, I am in relationship with him or her? Are you ready to accept, to face this situation, any one of you? If you are not, then regarding this current challenge, a lesson from Karbala which we need to get is work to prevent and protect our children. How can you protect if you don't know what is the harm? क्योंकि वहाँ जो रिलेशनशिप पढ़ाया जा रहा है, बहुत बुनियादी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बेसिक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि because you know the culture here, जो मगरिबी तहजीब है, the relationship out of marriage is not a big deal for them. It's not haram near them. But Islamically, religiously, these are the haram things. These are the haram things. You might be thinking, what is the haram means? याद रखें, ये फरमाया गया कि गैर महरम का वो बदन का हिस्सा, जिस बदन के हिस्से पे किसी गैर महरम का हाथ पड़े या हाथ लगे, अल्लाह उस हिस्से को जहन्नम के लिए ग़िज़ा बना देता है. जहन्नम के लिए ग़िज़ा बना देता है. And these things, if you don't take it seriously and take all the measures to protect your children, how you will protect them? Because when I am talking now, I can see, I can watch many of you finding it maybe a difficult one, because we are not oftenly talk and speaks regarding these issues. But the reality is, it is one of the serious concerns and the biggest threat for our community, our children, our boys and our girls. Do you want your kids to grow up by accepting and by believing that adultery, zina and having a relationship and affair out of the marriage is not haram, it is jaiz, is normal? Is any one of you, जो भी है आप में से, are you ready to accept this situation? We are not ready. We are not ready. Why we are not ready? Because Imam Hussain radiyallahu ta'ala anhu, he sacrificed his life to make us realize these things. कि यजीद भी जिना को वहां पे आम कर रहा था और जिना को फैला रहा था. हुसैन ने गर्दन कटा के
बच्चे कुर्बान करके बता दिया कि जान देना तो गवारा है, लेकिन जिना को आम होते हुए देखना गवारा नहीं है। इफ वी आर सुन्नी, अगर हम इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं तो हमें इमाम हुसैन के उसी जज्बे का मुजाहिरा करना है कि वी विल नेवर लेट आवर चिल्ड्रन to grown up with believing that adultery is normal, zina is normal, and relationships out of marriage is normal. Will not let them. And it is not a mandatory thing, it is not a optional thing for you. अगर आपने नहीं किया तो दुनिया में जो आप देखेंगे, लेकिन आखिरत में क्या है? आखिरत में क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात याद रखो, इमाम शाफी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, फरमाते हैं कि मन जना फी बैतिन बिगैरि दिरहमी युजना फी बैतिही बि अल्फी दिरहमी। इमाम शाफी कहते हैं कि जिना, एडल्टरी इज ए डेब्ट। जिना एक कर्ज है। जिना एक कर्ज है कि अगर किसी ने, इफ एनीवन committed adultery with the sister or the daughter or the mother or the wife of anyone, then this act of zina and adultery, it stays as a debt for this person. क्यों? क्योंकि there will time come when someone will do the same thing with his mother or with his daughter or with his wife or with his sister. zina कर्ज है। जिना कर्ज है। अगर तुम किसी की बहन, माँ, बेटी या बीवी के साथ करोगे तो कोई और तुम्हारी बीवी, बेटी, माँ या बहन के साथ वो काम करेगा। इमाम शाफी कहते हैं कि जो किसी घर में बगैर किसी रकम के खर्च किए जिना करे तो उसके घर में ऐसी हालत आ जाती है कभी कभार कि उसके घर में रकम खर्च करके, पैसे दे करके जिना किया जाएगा। Imam Shafi'i radiyallahu ta'ala anhu have mentioned this. A person came to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, एक नौजवान हुजूर की बारगाह में आया और आकर के कहने लगे, he can't hold himself, he can't stop himself from the committing zina. And then he came to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and he asked, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, please make zina halal for me. एक नौजवान हुजूर के दरबार में आए और आकर के कहने कि हुजूर मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ, मुझसे नहीं हो पाता है, हुजूर जिना आप मेरे लिए हलाल कर दीजिए, मेरे लिए हलाल कर दीजिए। यू नो व्हाट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिप्लाइड? हुजूर ने क्या कहा? हुजूर ने कहा आओ बैठो। फिर हुजूर ने कहा अगर तुम जिना करोगे तो किसके साथ करोगे? किसी की बेटी के साथ, किसी की बहन के साथ, किसी की बीवी के साथ या किसी की माँ के साथ? फिर हुजूर ने एक सवाल पूछा, क्या तुम इस बात को गवारा करते हो कि कोई तुम्हारी बहन के साथ जिना करे? Will you accept this कि someone will commit the same thing with your wife? Will you accept this कि कोई तुम्हारी बेटी के साथ, तुम्हारी माँ के साथ, तुम्हारी खाला के साथ या तुम्हारे किसी रिश्ते के साथ ये करे? उसने कहा कि नहीं या रसूलल्लाह, हरगिज नहीं। तो फिर हुजूर ने फरमाया लोग भी अपनी बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए, बीवियों के लिए, माओं के लिए इसे कबूल नहीं करते हैं। अगर तुम करोगे तो तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। फिर उसने कहा हुजूर मेरे लिए दुआ करें। फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पे हाथ रखा और दुआ की कि अल्लाह तेरे दिल से ये गंदी ख्वाहिश निकाल दे और अल्लाह तुझे नेक बना दे, नेक बना दे। फिर हुजूर ने फरमाया कि तुम हलाल की तरफ जाओ, अल्लाह बचाएगा तुम्हें, अल्लाह बचाएगा तुम्हें। And now these kids are very innocent because the RSC is being taught in the schools from the very early age. Very early age, a parent, they might not have any discussion regarding this with their children, but the children, they already learn these things because of the RSC in the schools. And when they learn from there, then they will know more, they will not have any awareness regarding the haram relationship and the halal relationship. It is like a blank page. Their brains, their minds are like a white blank sheets. Whatever you written, you will write on these blank sheets on the first time. That will what they will remember. That is why the psychiatrist, माहिर नफ्सियात, वो कहते हैं कि बचपने में बच्चों के जहन में जो चीज डाल दी जाती है, जो चीज डाल दी जाती है वो मरते दम तक उनके दिमागों से नहीं निकलती है, नहीं निकलती है।
if your children, your kids learning these stuff, कि भाई adultery, having a boyfriend and having a girlfriend and a relationship with the same genders, it is halal and it is normal, then what do you think? What do you think? Then there will be another trait for your children is they will be no longer stay as Muslims. Why? अगर जिना को कोई हराम जान के करे तो भी हराम है, लेकिन अगर कोई जिना को हलाल जान ले, then such a person is out of the fold of Islam. He will no longer he will remain as a Muslim. Is that what we want for our children? Is that what we want for our kids? अगर नहीं तो ये आपकी जिम्मेदारी है. You must check and you must sit with your children, with your kids on the daily basis. On daily basis. Beta, beti, son, daughter, what you have learned today. And you need to tackle it. You need to clear their innocent brains and minds on the daily basis. कि आज क्या पढ़ा? If something they have learned against the religion, against our values, then you must have clarified it. At the same time, and the most important and better thing is, before they learn things there, you must taught them कि बेटा remember whatever you read, whatever you listen, whatever you heard, anywhere. Remember one thing, in Islam, the relationships out of marriage are strictly prohibited, strictly haram. ये बात आपको अपने बच्चों को पहले से दिमाग में बिठा देना जरूरी है, ताकि जब वहां जाएं तो उनके दिमाग में ये हो कि it is something what not allowed in Islam. It is something what not jaiz in Islam. It is something what prohibited in Islam, what is haram in Islam. ये बताना जरूरी है. ये बहुत बड़ा चैलेंज है. इमाम हुसैन आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने करबला में हज़रत अली असगर और अली अकबर को जो शहीद कराया, वो इन्हीं वैल्यूज को बचाने के लिए शहीद कराया. शहीद कराया क्योंकि यजीद के हवाले से मिलता है कि यजीद जिना को आम करता था, यजीद शराब को आम करता था, इन बुराइयों में मुब्तला था. Then these are the challenges, and as a lesson from the Karbala, we need to tackle this. We need to respond this with teaching our children, our kids, the true manners, the right values, the halal things and the haram things in Islam. And you need to talk to your children. Don't keep this thing as a taboo. You need to break the taboo now. क्योंकि अगर आप ऐसे ही रहोगे, ऐसे ही बैठे रहोगे, you will end up in a situation when your children will bringing their girlfriends and boyfriends into your home, and by this time you will just watching. You have no choice left. You will have no choice in your hands at the time. अगर उस situation से बचाना है तो आज react करो. If you don't want to end up in such a situation, then you now need to react now. इससे बेहतर है कि पेरेंट्स होने के नाते, उनके रिश्तेदार और करीबी होने के नाते आप उन बच्चों को समझाएं. At least what you can do, the simple things. Take the ayat which are mentioned in the Quran regarding zina, the verses, how bad zina is. Few ahadith. If you don't have, contact us, come to us, we'll guide you. Regarding the zina, what Rasulullah ﷺ mentioned in the ahadith, the effects, the harms in this dunya and the akhirah, उसके क्या बुरे असरात हैं. These things from the very early age you need to teach our children, because we don't have any option. We don't have any option. ये उम्र बच्चों को ये बातें कराने की नहीं होती है. But now we are already in a situation जहाँ पे हमारे पास कोई चॉइस नहीं है. कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि अगर हम उनको ये नहीं बताएंगे कि ये हराम है, तो इस उम्र में वो ये जान लेंगे, ये सीख लेंगे कि ये नॉर्मल है. Then they will be growing up by believing it is correct, it is right. तो हमारे पास ऑप्शन ये है कि जो शरीयत मुतहरा में, दीन में, अहादीस में, कुरान मजीद में इनके हवाले से बातें वारिद हुई हैं, वो हम अपने बच्चों को बताएं कि बेटा ये हराम है, ये नाजायज़ है, इसको करने से ये बुरे असरात होते हैं. जब हम ये तरबियत पहले, इससे पहले कि उनके जहन में वो सीड आए, जो चीज़ डाली जाए, उससे पहले ये डालेंगे, तो इंशाअल्लाह अज़ीम somehow इंशाअल्लाह we can protect our children. हम अपने बच्चों को बचा सकते हैं.
अपनी आने वाली नस्ल को बचा सकते हैं, जनरेशन को बचा सकते हैं। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। इमाम आली मकाम की कुर्बानी को अगर आप मना रहे हैं, हम मना रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो उस कुर्बानी की रिक्वायरमेंट ये है, तकाजा ये है कि जिस मकसद के लिए इमाम हुसैन ने जान दी, जिस पर्पस के लिए आपने कुर्बानी दी, उस मकसद को जिंदा रखा जाए, उस मकसद को जिंदा रखा जाए। अदरवाइज देयर इज ए नो मीन it doesn't make any sense to celebrate any event regarding the Karbala if you are not upon the same page with the Imam Hussain radiyallahu ta'ala. If you are not valuing his sacrifice, if you are not serving the purpose for which he sacrificed his life, अगर ये नहीं है तो फिर ये जलसे मनाने का कोई मतलब नहीं है, ये गैदरिंग्स करने का कोई मतलब नहीं है। ये जलसा हम मना रहे हैं, याद कर रहे हैं अहले बैत और कुर्बानी करबला के शोहदा की याद कर रहे हैं, तो उनके मकसद को याद रखो। उनका मकसद ये था कि जिना को हलाल ना किया जाए, शराब को आम ना किया जाए, बदकारियों को आम ना किया जाए, हम जिन्स परस्ती को आम ना किया जाए। अब ये चीज़ें बहुत हद तक माशरे में सर फैलाने लगी हैं और हमारे नौजवान, हमारे बच्चे इसमें फंसने लगे हैं। तो करबला से सबक हासिल करते हुए इमाम आली मकाम के मकसद को जिंदा करने के इरादे से हमें बहुत ही चाको चौबंद रहते हुए एक्टिवली इसको रेस्पॉन्ड करना है और इसको इस वबा से हमारे बच्चों को बचाने की कोशिश करनी। आई होप द मैसेज आई वांटेड टू डिलीवर टुडे इट हैज रीच्ड। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंसर्न इज द बिगेस्ट डेंजर फॉर अस। अल्लाह तबारक व तआला हमारे बच्चों की हिफाजत फरमाए। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के नक्श कदम पे चलने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। शराब से, जिना से, बदकारी से, जुए से अल्लाह हमारे नौजवानों की हिफाजत फरमाए और करबला की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला हमारी नस्ल को इमाम हुसैन के नक्श कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी अस्तगफिरुल्लाह रब्बी अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व खतीअतिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।